बच्चों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के सब टॉपिक पार्ट पर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। Discriminant of a quadratic equation ax² + bx + c = 0 given by d = b² - 4ac. This is discriminant of quadratic equation. एंड नेचर ऑफ रूट्स, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किस किस केस में क्या मिलती है और उनके नेचर क्या होंगे रूट्स के। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके रियल और इक्वल होंगे, सेम होंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है, जैसे 1 है, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। बट अगर ग्रेटर देन 0 मिलता है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इस केस में रूट्स रियल तो है, ये तो कंफर्म है, लेकिन उस रियल के पार्ट में रैशनल और अनइक्वल होंगे। और अगर डी की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती है, लेस देन 0 मिलता है, तो नो रियल रूट्स। तो उस नेचर ऑफ रूट्स पर रिलेटेड सम प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम 1, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो इस क्वेश्चन के लिए चलते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो वैल्यू ऑफ a आपको मिल जाएगी 1 एंड वैल्यू ऑफ b द कोफिशिएंट ऑफ x -3 एंड कांस्टेंट टर्म वैल्यू ऑफ c 2k. Since the equation have equal roots, so in this case value of discriminant b² - 4ac = 0, and put the value of a, b and c in it. Value of b -3 whole square -4 and value of a 1 and value of c 2k, and simplify. 9 - 8k = 0. Again simplify. So you will get value of k 9/8. Answer. And next problem. For what value of k the quadratic equation have equal roots? So here is some changes. In this given quadratic equation, on comparing this quadratic equation with the standard form, and value of a 1 and value of b -k and value of c 4. वैल्यू ऑफ a के लिए कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ कोफिशिएंट 1 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x वो वैल्यू b की हो जाएगी एंड कांस्टेंट टर्म c होगा। And since the quadratic equation have equal roots, so then the value of discriminant b² - 4ac = 0, and put these values in it and simplify. k² - 16 = 0, and 16 transfer on right hand side, k² = 16, and remove square, so plus minus square root. This values give two values, so answer is k = ±4. Next problem. For what value of k the quadratic equation have equal roots? So in a similar procedure, on comparing this quadratic equation with the standard form and value of a 1 and v -k and c 4k. So again apply the condition having equal roots. So condition is b² - 4ac = 0, and put again these values in it. The value of k -4, वैल्यू ऑफ b मिल गया यहाँ पर -k, एंड सिंप्लीफाई k² - 16k = 0, टेक कॉमन k in bracket k -16, and again k = 0 and k -16 = 0. In this case you will get k = 0 and 16, both values satisfy the condition of quadratic equation. So put these value and check the condition, then obtain quadratic equation have equal roots or not. Next problem. For what value of k the quadratic equation have equal roots? The given quadratic equation, and
convert into standard form. So open this bracket, kx square minus 2kx plus 16. On comparing this quadratic equation with the standard form, so in this case value of a k and value of b minus 2k and c 6. In this question, since equation have equal roots, so apply condition b square minus 4ac is equal to 0 and put the value of a, b, c in it. So in this case, minus 2k whole square minus 4 value of a k and value of c 6 and simplify. 4k square minus 24k is equal to 0. Take common 4k, then bracket k minus 6 and again simplify. 4k is equal to 0 and k minus 6 is equal to 0. Again simplify, k is equal to 0 and k is equal to 6. Check the condition at this value, but at k is equal to 0, the condition of quadratic equation is failed. That is 6 is equal to 0, not possible. So the required answer, the value of k is 6. Next problem. For what value of k the quadratic equation have real roots? So in this case condition change. The given quadratic equation and comparing it with the standard form, then value of a 1, b minus 3 and c 2k. Since the quadratic equation have real roots, so condition, noted condition, b square minus 4ac greater than or equal to 0 and put the values of a, b, c and simplify. In this case, simplify or transfer minus 8k in right hand side, so sign will be changed. 9 greater than or equal to 8k. Now k less than or equal to 9 by 8. This is the required answer. And the last problem, find the nature of roots of this quadratic equation. The given quadratic equation and comparing with the standard form, value of a 1, b minus 1 and c minus 4. And the value of discriminant d is equal to b square minus 4ac and value is put abc in it. Value of b minus 1 minus 4 into value of a and into value of c and simplify. Minus 1 square positive sign and product, so in this case plus 16 and value of discriminant you will get 17, which is a positive value or greater than 0. So in this case, but 16 is not a perfect square number, so in this case roots of quadratic equation are real and unequal. That is real in this case, not perfect square, so is also irrational. That's all.